Hello everyone, today we will study about shift registers. If the register is capable of shifting the bits either towards left or the right, then it is called shift register. It is of two types, left shift register and right shift register. लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर में हम बिट्स को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं और राइट शिफ्ट रजिस्टर में हम बिट्स को राइट साइड शिफ्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द डेटा हेयर 0010. तो लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होगा, जो भी बिट्स हैं वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट होंगी. हेयर 0 विल बी गॉन, दिस 0 विल कम हेयर, 1 विल कम हेयर, 0 विल कम हेयर और एम्प्टी स्पेस में हम हमेशा क्या ऐड करते हैं, 0. नेक्स्ट क्लॉक पल्स में अब दिस 0 विल बी गॉन, 1 विल कम हेयर, 0 विल कम हेयर, 0 विल कम हेयर एंड एम्प्टी स्पेस में वी विल ऐड 0. In the case of right shift register, all the bits will be shifted towards right. This 0 will come here, 0 will come here, 1 will come here and last 0 will be gone and empty space में we will add 0. Again 0 will come here, 0, 0 and in the empty space we will add 0. So this is about shift registers, left shift register and right shift register. Further on, this is of four types: SIPO, PISO and PIPO. Serial in serial out, serial in parallel out, parallel in serial out and parallel in parallel out. First, we will study about SIPO, serial in parallel out. In this, the input is given serially and the output is taken parallelly. हम इनपुट तो देंगे वो सीरियल में देंगे और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो पैरेलल मिलेगा. ठीक है. अगर हमें शिफ्ट रजिस्टर्स बनाने हैं तो उतने ही नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वी रिक्वायर्ड. फॉर n बिट शिफ्ट रजिस्टर्स वी नीड n फ्लिप फ्लॉप्स. n इज द नंबर ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स दैट यू वांट टू हैव. लाइक फॉर 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर वी नीड 3 फ्लिप फ्लॉप्स. फॉर 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर वी नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स. दिस कैन बी शोन एज लाइक दिस. Suppose for 3 bit shift registers we need 3 flip-flops, so these are the number of flip-flops we have and D is the input, Q is the output. D we have taken here D type flip-flop, that's why we have represented as D in the input. This is your data input and this will be your data output. हमने data enter serially करा है लेकिन हमें output parallelly मिला है. Same here, data D2 will be entered serially and Q2 will be output as parallelly. D0 and Q0. Here it is Q0 or D1, Q1. But the output of the first flip-flop is connected to the input of second flip-flop. Here also the output of the second flip-flop is connected to the input of the third flip-flop. In this we have represented like shift registers. Furthermore, for 4 bit shift registers we need to have 4 bit flip-flops. These are the 4 flip-flops. D3 will be the input and Q3 will be the output which is connected to the input of second flip-flop like D2. Q2 will be the output which is connected to the input of the third flip-flop D1. Q1 will be the output which is connected to the fourth flip-flop D0. Fine. So D3, Q3, D2, Q2, D1, Q1 and D0, Q0 are the input and output of these 4 flip-flops. In this we have represented a shift register. If you want to have a truth table of these shift registers, we need to consider the data. Here I have considered the data like this, 1011. You have to consider this data from MSB 1011. So this will be your clock inputs D3, D2, D1 and D0. These are the inputs. And Q3, Q2, Q1 and Q0, these are your outputs. Initially at clock 0, all the data inputs and the data outputs are 0. क्योंकि अभी हमने कुछ भी इनपुट नहीं करा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा. सो ऑल दिस विल बी 0. एट क्लॉक 1 जो हमारी लास्ट बिट है D3 में वो एंटर्ड होगी तो D3 विल बी 1. अब D2, D1, D0
अटैच्ड हैं हमारे प्रीवियस इनपुट से, लाइक D2 इज अटैच टू Q3, तो Q3 की प्रीवियस वैल्यू थी 0, तो हेयर इट विल बी 0. D1 इज अटैच टू Q2, Q2 की प्रीवियस वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे भी 0. D0 इज अटैच टू Q1, Q1 की प्रीवियस वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे भी 0. नाउ द आउटपुट्स विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स. अब D3 अगर 1 है तो Q3 भी 1, क्योंकि अगर हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें 1 मिलेगा. दिस इज़ 0, तो दिस इज़ 0, अगेन 0, 0, 0 एंड 0. फाइन. नाउ इन नेक्स्ट क्लॉक पल्स हमारे पास डेटा इनपुट जा रहा है 0, तो नाउ D3 विल बी चेंज टू 0. D2 विल बी डिपेंडेंट ऑन Q3. Q3 की प्रीवियस वैल्यू थी 1, नाउ D2 विल बी 1. D1 is attached to Q2, Q2 की प्रीवियस वैल्यू 0 थी, तो इट विल बी सेम एज 0. D0 is attached to Q1, Q1 की वैल्यू थी 0, तो दिस विल बी अगेन 0. Now again the output will be changed according to the corresponding inputs. If D3 is 0, Q3 will be 0, D2 is 1, then Q2 will be 1, D1 is 0, then Q1 will be 0, and D0 is 0, then Q0 will be 0. Next data input we have 1. Again D3 will be changed into 1. Now D2 value will be converted by Q3. Q3 is 1 here. Q3 is 0 here, so D2 will be 0. D1 is attached to Q2. Q2 is 1 here, so D1 will be 1. D0 is attached to Q1. Q1 is 0, so D0 will be 0. Again the output will be changed according to the corresponding inputs. Now at last clock pulse, again D3 value will be 1 and D2 will be attached to Q3. So Q3 previous value is 1, so here it will be 1. D1 is attached to Q2. Q2 is 0, so D1 will be 0. D0 is attached to Q1. Q1 is 1, so D0 will be changed to 1. Again the corresponding outputs will be changed according to the inputs. At last, means at clock 4, we get the data 1101 that we have entered serially. At this clock pulse, we will stop the SIPO process, and in this way the data is entered serially. So by considering this table, we have analyzed that for n bit shift registers we need to have n bit flip flops, and we need to have n bit clock pulses also, because हमें 4 शिफ्ट रजिस्टर्स चाहिए थे, तो हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स बनाए, एंड हमारे पास 4 ही क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड है, 1 2 3 4. So for n bit shift registers we need to have n bit flip flops as well as clock pulses. This is all about SIPO. I think it is clear now.